एजुकेशन करके दिखाएंगे। Namaste and welcome to the next lesson in PT's Confidence Booster. Thank you so much for all your love, affection and support. That is exactly what keeps our team going, isn't it? Let's begin the work for today. PT's Confidence Booster, current affairs and practice questions. Karke dikhayenge, indeed. Remember that the full session will always be available on the PT Booster site. On both YouTube and our site, the sessions are free forever for everyone. Let us see what Steve Jobs said as part of his message to a graduating class in a certain Ivy League college. महान स्टीव जॉब्स के शब्द क्या कहते हैं? You can't connect the dots looking forward, you can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever. This approach has never let me down and it has made all the difference in my life. My dear students, remember, ये सारी चीज़ें जो हम कॉन्फिडेंस बूस्टर्स में, वोकैब बूस्टर्स में और बोधी बूस्टर पोर्टल पे आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे डॉट्स आपके नॉलेज को एक कॉम्प्रिहेंसिव आकार देंगे. जस्ट ट्रस्ट इन दीज एंड ओवर द पैसेज ऑफ टाइम ये सारे जुड़ जाएंगे और पूरी दुनिया की एक कॉम्प्रिहेंसिव यानी समग्र पिक्चर आपके सामने बनकर रहेगी. Remember, we have a fantastic vocabulary development course from A to Z जो आप ऑनलाइन एनरोल कर तुरंत पढ़ाई शुरू कर सकते हैं. 50 lectures, each session absolutely amazing and very well crafted. This can put you in a different league altogether. To enroll, just go to the link shown on the screen. A very good news for all those who are targeting UPSC prelims exam. We have a fantastic crash course now available which you can study at your home. 75 current issues covered. आपको 75 current affairs के lecture मिलेंगे. Full economic survey and budget is covered. 5+5 full length mock test for prelims exam and downloadable PDF from some of these sessions. आपको करना सिर्फ इतना है, स्क्रीन पर दिखाई दे रही लिंक पर जाना है. When you reach that link, this is what you will see there. You will have Gurukul and this is the course. All you have to do is read everything about the course and add to cart और 2 मिनट के अंदर आप enroll कर सकते हैं. And once you enroll, you will have access to some of the best lectures जो remaining समय में आपको quickly सब कुछ revise करने में बहुत मददगार सिद्ध हो सकते हैं. So think about this and it can make a big difference to your final result. कॉन्फिडेंस बूस्टर ऑफर्स यू करंट अफेयर्स हाइलाइट्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस. हम सब कुछ हिंदी में पैरेलल समझाते हैं एंड वी आर ऑफरिंग यू रेगुलर रीडिंग लिंक्स फ्रॉम आवर बोधी बूस्टर नॉलेज पोर्टल. हर एग्जाम के लिए वेरी वेरी यूजफुल. लेट्स बिगिन विद द करंट अफेयर्स हाइलाइट्स फॉर द डे. आर यू रेडी? नोटबुक निकाल लीजिए, हर चीज लिखते चलिएगा. अ लॉट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड ऑन अ डे टू डे बेसिस एंड वी आर ट्राइंग टू कीप यू अप टू डेट विद एवरीथिंग दैट्स ऑफ सम इंपॉर्टेंस. वर्ल्ड पॉलिटिक्स. The International Court of Justice, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ, asked Pakistan to desist from executing Kulbhushan Jadhav until the ICJ gives the final ruling on India's claim that Pakistan violated the Vienna Convention in this matter. India's claim rests on Article 36 of the Vienna Convention, which allows for consular access to foreign nationals. The main question here is whether ICJ's ruling is binding on Pakistan or not. And even if it is, will Pakistan ever comply? So as we know, the Vienna Convention on Human Rights, मानव अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय न्याय पर विनियन कन्वेंशन आपको ये बताता है कि किस प्रकार से कोई भी राज्य अपनी सीमाएं तय करके ही काम कर सकता है. And the International Court of Justice's rulings may not be finally binding, but they can put a huge diplomatic pressure, which in this case actually happened. These are the documents pertaining to the case that India has filed in the ICJ. तो आप देख सकते हैं, India acted very very fast, and this is a brilliant move. You can read these later carefully और इसकी लिंक्स भी हम आपको दे देंगे. बोधी रिसोर्सेज पेज पे आपको सब कुछ मिलेगा. And
यूनाइटेड नेशन का चार्टर है ये। दिस इज द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस 1945, जिसकी मदद से यूनाइटेड नेशन बना था, और उसमें इसी के जरिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना भी की गई थी। ये समझ में आ गया आपको? सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वॉज एस्टैब्लिश्ड। The representative of India at the ICJ for the Kulbhushan Jadhav case is noted lawyer Mr. Harish Salve. ये सब आप याद रखिएगा, एग्जाम्स में आपको बहुत काम आएगा। World politics. American President Donald Trump dismissed the director of Federal Bureau of Investigation, James Comey, in the middle of FBI's investigation into Trump's Russian connections and the impact on the US presidential campaign. Trump said that this dismissal of Comey was necessary to restore public trust and confidence. This could initiate a new series of major executive orders from Trump. Now, by the way, Comey is 6 feet 6 inches in height. तो FBI के बर्खास्त निदेशक श्री कोमी 6.5 फुट लंबे अमेरिकन हैं, और ये पूरी कहानी मैं आपको समझाता हूँ। This is James B. Comey Jr., the Chief of Federal Bureau of Investigation, America's leading investigation agency or intelligence agency कह सकते हैं, which is now investigating whether Trump's election was unduly influenced by the Russian hackers by releasing details of the private email server used by Hillary Clinton. So before I get into that, इसकी पूरी लंबी चौड़ी कहानी को आपको समरी बता देता हूँ। Hillary Clinton, when she was Secretary of State in the Barack Obama administration, instead of using a government-offered computer, she set up a private email server at her home. And that was called an act which wasn't entirely justified. Many went to the extent of saying that this is a criminal act क्योंकि इससे official secrets leak हो गए हैं। और उस पर FBI ने investigation शुरू किया था, जिससे ट्रंप को इलेक्शंस में भारी मदद मिली। लेकिन now the allegations are on Trump that he was helped by the Russian hackers indirectly and that his close circle has had relations with the Russian administration or the Russian government of Putin. उस चक्कर में FBI निदेशक की तो बलि चढ़ गई। Indian politics. Amid bribe charges against the Chief Minister of Delhi Arvind Kejriwal and his cabinet colleague, Delhi's AAP government, in a dramatic move, convened a special session of the Delhi Assembly and staged a live demonstration of EVM tampering. Electronic voting machine में छेड़खानी संभव है, ये उन्होंने लाइव बताने का प्रयास किया। The Election Commission has rejected AAP's claim that EVMs can be hacked, stating that the machine was an EVM lookalike, not a real EVM. So here is the minister or the member of the AAP government in Delhi demonstrating how EVM can be hacked. लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ये हमारा EVM नहीं है, आप हमने जो EVM रखे हैं उसमें आइए, आपको चैलेंज है, आके हैक करके बताइए। अब अगर वहां इन्होंने हैक करके बता दिया तो पॉलिटिकल स्टॉर्म आ जाएगा, और अगर नहीं कर पाए तो भी पॉलिटिकल स्टॉर्म आ जाएगा। फोर्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर. During the Infrastructure Progress Review meeting, Prime Minister Modi called for the establishment of model solar cities where power needs are fulfilled only by solar energy. He also wants to give a thrust to the manufacturing of solar equipment ताकि नौकरियों का सृजन हो सके. India's renewable energy targets for 2022 are 175 gigawatts, of which 100 gigawatts will be solar. 2022 तक भारत में अक्षय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, जिसको फिर से भरना नहीं पड़ता फॉसिल फ्यूल से डिराइव्ड एनर्जी की तरह, कोल ऑयल गैस की तरह, 175 गीगावाट का टारगेट लेके चल रहे हैं. 1 गीगावाट इज 1000 मेगावाट, जिसमें से सोलर होगा 100 गीगावाट्स. So if you look at India's target, this is what it is: solar, wind, biomass, स्मॉल हाइडल प्रोजेक्ट, ये सब मिला के 175 के आसपास हो जाएगा, जिसमें सोलर 100 होगा. सोलर का ब्रेकअप देख लीजिए: अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स, यूटिलिटी स्केल सोलर प्रोजेक्ट्स. If you compare 2016 with 2022, India only had 6 gigawatt installed capacity of solar. उसको बढ़ा के 15 से अधिक गुना कर देंगे 100 gigawatt, and similarly for wind and biopower. ईयर बाय ईयर टारगेट सेट किए गए हैं सोलर के लिए.
2017 में 17, 2018 में 32, 2019 में 48, and so on and so forth. So this is how India's extremely ambitious renewable energy mission will be completed. Let's hope it happens, because India is a sun-rich country and this can totally transform our perspective of energy going forward. एग्जाम के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ के नोट कर लेना. फिफ्थ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, संविधान और विधि. भारत की जुडिशरी में भारी खलबल मची हुई है, आपको पता ही है. इन अ ड्रामेटिक डेवलपमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन जुडिशरी, अ हाई कोर्ट जज ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट, Justice C.S. Karnan, who is facing contempt charges for having written about the alleged corruption of Supreme Court judges, he sentenced the Chief Justice of India, J.S. Khair, and several other judges of the Supreme Court to 5 years rigorous imprisonment, RI. तो कर्नन साहब ने सुप्रीम कोर्ट के भारत के मुख्य न्यायाधीश खेहर और 7 अन्य जजों को सश्रम कारावास की सजा सुना दी. The Supreme Court, on the other hand, immediately held the rebel judge guilty of contempt of court and sentenced him to 6 months in jail. Karnan is the first sitting judge in India's judicial history to be sentenced to a prison term. So all this is creating a lot of pressure on the judiciary's reputation, and we can only hope that things get settled soon. इस तरह का झगड़ा हायर जुडिशरी के लिए अच्छा नहीं है. Climate change and global warming. President Trump has delayed his decision to honor or walk away from the Paris Climate Accord until after his return from the G7 meeting. बहुत बड़ा प्रश्न यह है कि जो पेरिस अग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज 2015 और 2016 में हुआ था, दुनिया भर के देशों ने उस पर हस्ताक्षर किए. ट्रम्प हैज ऑलरेडी डिबंक्ड दैट एग्रीमेंट. उन्होंने कहा है कि अमेरिका को अब इसमें कोई रुचि नहीं है. यह तब हुआ है जब एंटार्क्टिक और आर्टिक दोनों क्षेत्रों से बहुत बुरी खबरें क्लाइमेट चेंज की आ रही हैं. ट्रंप ने अब यह कहा है कि पहले मैं G7 की मीटिंग अटेंड करूंगा. तो अब आप हमें बताइए G7 के सदस्य कौन कौन हैं, G7 का रोल क्या है, विच मेंबर नेशन ऑफ G7 विल बी अटेंडिंग द चाइनीज वन बेल्ट वन रोड फोरम, ये आप हमें जरूर बताइए. और ट्रंप ने कहा है कि आफ्टर द G7 मीटिंग में डिसाइड करूंगा कि पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड के साथ आगे बढ़ा जाए या नहीं. Divisions within Trump's administration have left in doubt the participation of the world's number 2 carbon polluter after China in the landmark 2015 agreement to limit global warming. Everyone knows that China is the biggest emitter, carbon dioxide emitter in the world, and America is number 2, and this gap will gradually widen, and India is also slowly catching up. Although India के renewable targets पूरे हो गए तो शायद हमारा emission बहुत कम हो जाएगा. पेरिस अग्रीमेंट क्या वाकई अपने अंजाम तक पहुंच पाएगा 2 डिग्री तक लिमिट करना हीटिंग ऑफ द ग्लोबल एनवायरनमेंट को? इसमें अमेरिका का रोल बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. तो आप हमें जरूर बताइए जो प्रश्न हमने पूछे. और उसी कंटेक्स्ट में एक और प्रश्न आपसे पूछ लूं जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ भी कवर किया था. What is your perspective on what is happening in the higher judiciary in India? At the same time, there is a good news that the Supreme Court has gone fully digital, and now the entire appeals will not to be sent in paper format. Only the grounds need to be sent in paper format. Otherwise, the appeal will be electronically transferred, जो कि बहुत positive news. But what do you think of this entire crisis in higher judiciary? Do let us know. We will await your answers in the comments thread. क्लाइमेट चेंज पे बात कर लें. दिस इज द एंटार्क्टिक. यह है साउथ पोल. लार्सन ए, लार्सन बी, लार्सन सी, आइस शेल्फ. ए और बी टूट के अलग हो चुके हैं. लार्सन सी में बहुत बड़ा क्रैक पड़ चुका है. लार्सन सी आइस शेल्फ. दिस इज द वर्स्ट न्यूज कमिंग फ्रॉम एंटार्क्टिक. टॉकिंग अबाउट द आर्टिक, the minimum extent of the ice during the summers of the Arctic has been lowest in 2016, and that is an irreversible change. तो आर्टिक का पूरा स्ट्रक्चर बदल गया है और अगले 20 से 30 साल में शायद the summer Arctic will be fully ice free, and if Greenland starts to melt after that, permafrost in Greenland, that would be game over for mankind. We move on to demonetization and its impact on
the banking sector lending rates.